इवनिंग व्हाट्सअप हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई एम श्रीनाथ विद यू फ्रॉम स्टॉक पार टुडे as being Sensex expiry. Let us see how Bank Nifty and Nifty overall trajectory as per today. दोस्तों अभी आप देख सकते हैं आज पूरा मार्केट गैप डाउन खुला और थोड़ा बहुत रिकवरी किया और फिर मार्केट ने कंप्लीट नीचे आ गया। So the reason being is that जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ आज ड्यू टू फ्राइडे, सो आज फ्राइडे के दिन हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होता है। नया पोजीशन जो भी बनाने हैं ना, वो मंडे को सब लोग प्लान कर लेंगे और आज भी वही सिनेरियो हुआ था, क्योंकि कल थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे इस एरिया में एग्जैक्टली बैंक निफ्टी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी कल, और आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। ये ट्रेजेक्टरी जो है ये डाउनसाइड, ये एक दिन का चार्ट है, डेली चार्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हमको एक्यूमुलेशन मोड में है, बैंक निफ्टी थोड़ा एक्यूमुलेशन मोड में है। तो इसमें हम लोगों को बहुत ध्यान से अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा मंडे के लिए। सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, अगर आप 15 मिनट्स चार्ट में देखेंगे, ये है 15 मिनट्स का चार्ट, तो फिलहाल द अल्टीमेट थिंग इज ये बैंक निफ्टी का पूरा सुबह से एक रेंज बाउंड में था। आप देख सकते हैं इधर कंप्लीट जैसे वो गैप डाउन खुला, कंप्लीट एक रेंज बाउंड बना के पूरा इसी रेंज में था, ठीक है। तो जैसे ही रेंज अराउंड 2 बजे पौने 2 बजे करीबन ये रेंज ब्रेक हुआ, हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। लेकिन आप बैंक निफ्टी देखेंगे इट इज़ वेरी क्लोज टू द पिवट। जब आप पिवट पॉइंट के पास आते हैं ना, अगर वो सस्टेन करके ये पिवट को इन केस वो ब्रेक करें, then there would have been a possibility that Bank Nifty would have gone to the next higher levels. See, because as we discussed yesterday, we were expecting 44, 700, 800 levels if in case there was not a gap down. But today, due to global cues, Bank Nifty has given a gap down, and the reason being, it's like Bank Nifty is trying to correct for some time. Again, on the daily chart, when you look at it, is very simple that Bank Nifty has got a very clear tendency of moving towards 43,708 test around 44,200 levels. If in case it is correcting, अगर इधर से अगर Bank Nifty bounce pullback दे दिया, तो we can see a very good rally in the coming days. So traders, let us plan Bank Nifty in a very very good fashion for Monday. So let us look at Nifty. So what is the total movement of Nifty today and how did it behave? So guys, अगर आप Nifty देखेंगे, it is very very simple दोस्तों, it is just strong and you can see that Nifty again gap down, it went high, it recovered, it couldn't sustain at the S2 which is the resistance now, and it came down. So consolidated for some time. अगर आप देखेंगे पूरा कंसोलिडेशन मोड में था Nifty भी, करीब करीब 1-2 बजे पौने 2 बजे करीब करीब ये फिर से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। सो जब भी ब्रेकआउट होता है, वी हैव टू सी दैट दिस पर्टिकुलर रैली इज ट्राइंग टू ब्रेक आवर पिवट। इधर आप देख सकते हैं जब ये पिवट को टच कर रहा है, सो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये तीनों बार आप देख सकते हैं कि ये ट्राई कर रहा है कि मूव अपवर्ड मूव देने के लिए, बट ऑफ कोर्स ये इसके पास इट वाज नॉट पॉसिबल। तो फिलहाल क्या हुआ, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली पिवट से ही वो रिवर्स कर दिया। दोस्तों इसमें निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। सो मंडे आई नीड टू लुक एट अ काइंड ऑफ लेवल्स wherein if it is breaking this 19,800 we may go on long side. अगर if the closing is below this particular 17,750 these levels, or if it is trying still a lower level, we have to check and take position. Traders, according to this particular global scenario, Nifty is holding at a very 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 crucial point as of now, ठीक है। When you look at Nifty in a daily chart, right, so here we will understand that दोस्तों अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं अभी डेली चार्ट में, तो फिलहाल निफ्टी इज शोइंग अ वेरी वेरी बुलिश साइन। इट इज ऑलरेडी ट्राइड टेस्टेड, क्योंकि नीचे का जो सपोर्ट है 1 2 3 4, ये जो सपोर्ट वाला ये नजर आ रहा है 19,500, वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है, and compared to Bank Nifty, wherein like we are unable to check on Bank Nifty that the psychological level. See, because today overall when you see Bank Nifty has come down, okay, it has given a negative sign, so that this is a consolidation period. Traders, I would request you to kindly watch the market, because we are expect. So traders, for Monday the plan of action is very simple. If let us look at Bank Nifty in 5 minutes chart, let us try to understand. See, Monday we are expecting a gap up somewhere around this 444 450 levels. The reason being is that today market has tried, tested and corrected. We may look at least about some 100-200 points, at least at 44,370 levels. If there is a gap up, tentatively we have to plan our trades accordingly. So keeping this in mind, traders, looking at a daily spot, we have to plan our trades very accurately on Monday. See,